Hello everyone, let's solve GATE paper DA 2026 question number 11. For the classification problem, principal component analysis has been used to reduce the dimensionality of a feature space between 100 to 10. Which of the following options is true about angle theta and between the first and the 10th principal component? In order to understand this question, the very first thing we need to know what is PCA. So, the principal component analysis is a dimensional reduction technique जो हाई डायमेंशनल डेटा यानी कि 100 फीचर्स की जो बड़ा सा डेटा आपको दिया गया है उसको कम डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देती है मोर लाइक अ डाउनकास्टिंग। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ डेटा है वो प्रिजर्व्ड रहता है, ज्यादा से ज्यादा उसे प्रिजर्व रखा जाता है। तो लेट्स एक्चुअली राइट एवरीथिंग अप बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। So, I will write up everything. What is PCA? Principal Analysis Component. It is a dimensionality reduction technique. Dimensionality reduction technique. And what it does, it converts high dimensional data, HDD, to low dimensional data. And it preserves variance, sorry, it preserves maximum variable variance. So let's take it like this, that given data matrix X belongs to R to the power n cross D, where n is the number of samples and D is equal to, for example, 100 features. Okay, let's talk about the centering of data. So PCA में हम डेटा को मीन सब्ट्रैक्ट करके सेंटर करते हैं। इन PCA डेटा को मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सेंटर में करते हैं। तो लेट्स डू दैट x ऑफ सेंटर is basically x minus mu, where mu is the mean. अब फिर हम निकालते हैं उससे कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स किस तरह निकलती है? तो कोवेरियंस मैट्रिक्स इज 1 over n x t over x, where dimensions are, they belong to 100 cross 100. फिर हमें ईगन डिकम्पोजिशन मालूम होना चाहिए इसके लिए। वी आर लर्निंग द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द क्वेश्चन। इसका जो हार्ट है, लाइक it all revolves around eigenvalue decomposition, where summation of v of I is equal to lambda I v of I, where v of I is principal component or the eigenvector. Okay, and your lambda is a eigen value. अब कुछ लीनियर अलजेब्रा की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोवेरियंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल। अब इसकी जो थ्योरम होती है बेसिकली कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिकल, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल, देन उसकी जो इगन वैल्यूज हैं, इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल, if matrix is symmetrical,
then eigenvector is mutually orthogonal. मतलब v of I of t, v of j is equal to 0 for I not equal to j. और अगर नॉर्मलाइज्ड हो तो v of I t, v of j is equal to 1 and 0 when I is equal to j and I not equal to j. अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए. द ज्योमेट्रिक मीनिंग इज डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसका वो जीरो आता है. इस वजह से जो एंगल है दैट इज अराउंड 90 डिग्री. जो एंगल का फॉर्मूला होता है, आई होप यू गाइस नो यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा इज इक्वल टू v of t, v of 10 over v1 of and v10. Since uh, vi of 10 into v10 is equal to 0, this implies that cos of theta is equal to 0, and this is implies that theta is equal to cos inverse 0, that is around 90 degrees. अब जरा सवाल पे आगे बढ़ते हैं. तो सवाल में आपको दिखेगा कि पीसीए रिड्यूस डायमेंशंस फ्रॉम 100 to 10. एक बार सवाल खोल लेते हैं. तो सवाल में आपको ये चीज दिखेगी कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है उसने डायमेंशनैलिटी रिड्यूस की है एक फीचर स्पेस की फ्रॉम 100 to 10. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट द एंगल थीटा. तो जितनी इंफॉर्मेशन हमने इस क्वेश्चन के लिए गैदर की है उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इगन वेक्टर से कोवेरियंस मैट्रिक्स निकली. कोवेरियंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इगन वैल्यूज उसकी ऑर्थोगोनल होंगी. And first PC eigenvalue 1 and the 10th PC eigenvalue will be 10. All PCs are mutually orthogonal. That means V1 of t and V10 is equal to 0. That means cos theta is 0 and theta is 90 degrees. The final answer will be the angle between first and the 10th principal component is 90 degrees. सो यहाँ पे अगर आपको किसी को इंट्यूशन समझना हो कि ये सवाल सोचा कैसे गया है, तो इसको तुम ऐसे समझते हो कि डायरेक्शन वाइज दे आर परपेंडिकुलर. मतलब वेरिएंस मैग्नीट्यूड जो है वो एंगल के बराबर नहीं है, इसीलिए वो ऑलवेज ऑर्थोगोनल मानी जाती है. इसके अंदर अब कुछ बच्चे सोच लेते हैं क्योंकि वेरिएंस डिक्रीज हो रहा है ना तो वो 90 डिग्रीज के बराबर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता. वेरिएंस साइज का रिलेशन ऑर्थोगोनैलिटी से होता ही नहीं है. इसको आप लोगों को ख्याल रखना है. ठीक है. तो इसी के साथ आपका ये वाला सवाल समाप्त होता है. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. टेक केयर. बाय बाय.